very good evening, viewers. You're watching the Saturday edition of 6 Stories at 6, and I am Rakshita Mishra with you. The preliminary report of the Ahmedabad plane tragedy is out. We'll tell you what has been revealed and what has not been revealed yet. The findings, viewers, have brought focus to the fuel switch engines. What is cut off, or rather what is fuel cut off, what it really means, why did one of the pilots inquire about it to the co-pilot. We'll explain you all to that. And also, the Airline Pilots Association of India has raised questions on the report, alleging leaks, deliberate leaks to international media, also alleging bias towards pilot error. They're demanding transparency and also their involvement in the investigation. Also, Republic TV brings you a report from inside a cockpit to make you understand what could have transpired. Now, also the story from West Bengal, another shocker from a university in Bengal, viewers, allegations of rape inside the hostel of IIM Calcutta that have been made. All the latest on that. And finally, Republic TV also gets you the latest revelations made in the probe against the killer father of tennis player Radhika Yadav. We begin with the air crash report story, viewers. The Aircraft Accident Investigation Bureau has released the much-awaited report. It's an initial report, preliminary report, and this flight, which was bound for London's Gatwick Airport, crashed soon after takeoff from Ahmedabad on the 12th of June. Now, the report outlines a harrowing sequence of events that unfolded within 90 seconds of takeoff. Both the engines of the aircraft shut down unexpectedly during this initial climb, leading to a catastrophic loss of thrust and rapid descent. Now, my colleague Shravan Sen will take you through the details of this report. Take a look. On 12th of June, Air India flight AI-171 crashed in Ahmedabad that claimed 260 lives. 19 people on the ground lost their lives as the plane tore through buildings near the BJ Medical College. A preliminary report from India's Aircraft Accident Investigation Bureau was released today, which offers some critical insights into what went wrong when the Boeing 7878 registered VTA and B crashed just moments after takeoff from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. And here's what we know. The aircraft took off normally around 1:39 in the afternoon. It built the required speed of 180 knots, lifted off the ground and began climbing. But just 3 seconds later, both the engines suddenly lost power. The flight data shows that the fuel control switches on both the engines were moved from run to cutoff in a span of just 1 second. Now, in other words, both engines were shut down mid-air, just seconds after takeoff. On the cockpit voice recorder, one pilot is heard asking, "Why did you cut off?" The other responded, "I didn't." There was clear confusion. With no engine thrust, the plane started losing height. The emergency backup, that is the ram air turbine, was deployed already. That only happens when all main power is lost. The pilots thereafter tried to restart the engines. Within about 14 seconds, the pilots acted swiftly, restoring the fuel switches to the run position. The aircraft's systems attempted to relight the engines with rising exhaust temperatures, indicating the process had begun. Engine number 1 showed signs of recovery, but engine number 2 struggled, failing to regain full power. By then, the plane had already lost too much altitude. At about 1:39 and 51 seconds, the aircraft slammed into multiple buildings, destroying 5 of them and scattering debris across the BJ Medical campus. So what went wrong? The aircraft had passed its recently safety checks. The engines were newly installed just about weeks before the crash. There were no signs of bird heads, no cargo issues, no fuel contamination. But there was one advisory bulletin that was issued by the US authorities back in 2018, warning about a potential issue with the fuel control switches on Boeing jets. The switches on this very aircraft model were never inspected because the advisory wasn't even mandatory. It's still unclear whether this had anything to do with the accident, and investigators are not drawing conclusions yet. Now, this, remember, is a preliminary report. It doesn't assign blame, and it isn't final.
But it does confirm one thing. Both engines were shut down in the air within seconds of the takeoff. And the crew tried but couldn't recover. More analysis is underway, more answers will come. But for now, this report begins to explain what happened in those final tragic seconds over Ahmedabad. So we will let us understand what the fuel switch is all about. The flight data recovered from the aircraft's enhanced airborne flight recorder reveals that the fuel cutoff switches for both the engines were inadvertently moved from run to cutoff, one after the other within 1 second of interval at an altitude just moments after the liftoff. So there was not much altitude. One pilot was heard, as per the report, asking the other, "Why did you cut off?" To which the other responded, "I did not." Now, this uncommanded shutdown triggered the deployment of the ram air turbine, and the aircraft began losing altitude almost immediately, unable to sustain the lowered flight. However, the fuel locking feature in the Boeing aircraft control switches is automatic. Let's take you through the details of that, viewers. Let me just help you understand here what is really this switch or cutoff switch. Now, there you have in that photograph, you see fuel control, run and cut off, that text that is written. Now, Boeing aircraft fuel control switches are not automatic. They are manually moved. So, manual action is required for the pilots to unlock to move these switch. You can see the lever there. Built-in brackets prevent accidental movement of switches. So, there's no scope, if we go by this, to in fact accidentally touch or move it. Pilots must lift the lock before moving the switch to cut off. So the cut off, that is to stop the engine. It has a bracket as well, so it's secure. The moving switch from run to cut off requires two-step process. This, you can see, run and cut off. This requires two-step process. What are the steps? We'll tell you. This requires unlocking, step number 1, and then moving. Unlocking and moving, because it's locked earlier. Unlocking and moving switch are the steps, is the two-step process to move this switch. So to move it from run to cut off. And if the switch is moved to cut off, it stops the fuel supply to the engine. And that is what reportedly happened here. And this is what is being inquired by one of the pilots to the other, viewers. So this is the detail that has been revealed, viewers. And in fact, viewers, we understand that this has become a big focus, the fuel control switch. Questions are being raised now on what really had happened. The questions are being raised whether Air India and Boeing ignored some key advisory in the year 2018. US regulator Federal Aviation Administration flagged the issue of fuel switch locking feature malfunction. This is the 2018 FAA report, viewers. So what is this about? It's the mystery that is being unraveled. Now, first of all, what was the warning that was issued back in 2018? The US Federal Aviation Administration had flagged the issue in 2018. The watchdog issued a special airworthiness information bulletin in 2018. Boeing 737s showed fuel switch locking feature malfunction. So there was this, the mention of the fuel switch malfunction is not something that is unheard of if you go by this report. And fuel control switches transitioned within a second after liftoff. Again, let me take you back. This is 2018. This was flagged. Now, what more has been recommended by the FAA after that finding? Inspect the locking feature of the fuel control lock. So this is to be inspected, the fuel control switch. While a plane is on ground, check, investigate whether the switch is moved without lifting up. Because I told you earlier that it is secure, there is a process to it. But if nobody moved, as the pilot in this Gujarat air crash has said that he did not move it, what is the scope? What was the potential cause? That is something that could be linked here. If the switch can be moved without lifting up, locking feature is disengaged. So there is some problem with the locking. There could be a problem with the locking.
switch to be replaced at the earliest if locking feature is disengaged. So this is another recommendation, and this has to be checked when the aircraft is on ground. Was it skipped or was it ignored? Now, why was it ignored? Only because perhaps it was advisory. Should the FAA make this 2018 bulletin mandatory? Should it have made this mandatory back in 2018? Why did not operators like Air India act on the advisory? Even if it was an advisory, why was it ignored? It was ignored, viewers, despite involving critical engine control elements. Should the switch design be revisited after the Ahmedabad crash probe report? These are some pertinent questions that are looming right now, viewers. Now, in an exclusive conversation with Republic TV, Minister of State for Civil Aviation Muralidhar Mohol clarified that no sabotage angle has been identified in the recent air accident under investigation. He also adds that the current findings are based solely on a preliminary report by the AAIB. Listen in. नहीं, उसमें रिपोर्ट तो सबके सामने है। रिपोर्ट में जो लिखा है वो तो सबके सामने है, और मुझे लगता है कि उसमें ऐसा लिखा ही है कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है। AIB ने कहा है कि प्राइमरी रिपोर्ट है। जो ब्लैक बॉक्स मिला था उसको डिकोड कर दिया, डिकोड के बाद उसको उसकी सब उसमें से इंफॉर्मेशन जो डेटा भी निकाल लिया है, उसके आधार पे जो कुछ वहाँ पे पायलट में संवाद हुआ वो भी उन्होंने दिया है, और बाकी कुछ दिया है तो डिटेल्स है। लेकिन अभी कुछ निष्कर्ष हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। सर, फॉल्ट कहाँ पे मिला है? नहीं, वही तो उसमें है ना, रिपोर्ट में है, लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। कब तक आएगा रिपोर्ट सर? 1 महीने के अंदर पहला रिपोर्ट आया तो मुझे लगता है कि जल्दी आएगा। नहीं, उसमें रिपोर्ट तो सबके सामने है। रिपोर्ट में जो लिखा है वो तो सबके सामने है, और मुझे लगता है कि उसमें ऐसा लिखा ही है कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है। AIB ने कहा है कि प्राइमरी रिपोर्ट है। जो ब्लैक बॉक्स मिला था उसको डिकोड कर दिया, डिकोड के बाद उसको उसकी सब उसमें से इंफॉर्मेशन जो डेटा भी निकाल लिया है, उसके आधार पे जो कुछ वहाँ पे पायलट में संवाद हुआ वो भी उन्होंने दिया है, और बाकी कुछ दिया है तो डिटेल्स है। लेकिन अभी कुछ निष्कर्ष हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। सर, फॉल्ट कहाँ पे मिला है? नहीं, वही तो उसमें है ना, रिपोर्ट में है, लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। कब तक आएगा रिपोर्ट सर? 1 महीने के अंदर पहला रिपोर्ट आया तो मुझे लगता है कि जल्दी आएगा। So, as details emerged from a preliminary inquiry report, viewers, on the plane crash in Ahmedabad, now the Airlines Pilots Association of India have raised questions claiming the report was intentionally leaked to Western media. Remember, this story had come up in a Wall Street Journal. They also said that the probe was being driven in a direction presuming the guilt of pilots. And if you see the headlines in international media, viewers, they actually just directly throw the blame on the pilots. You see those headlines, viewers. And in fact, they've also questioned the capacity of the observers, who are providing the requisite transparency. They're questioning the transparency, basically, the Pilots Association. They also demand that their involvement should be there. And also, of course, they question that why, without any checks, without any full proof, without the full investigation, why the pilots are being held guilty. Viewers, that is what we are right now focusing on. Okay, we have, I think, all right, my colleague Kajal has in fact spoken to an expert on the same, and she will give you a view from inside a cockpit as well to help you understand what could have transpired if we go according to this latest report. That is just an initial report. अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से 10 से 12 सेकंड में पायलट और को पायलट के बीच में ये बातें हुई कि आखिर ईंधन इंजन किसने बंद किया। इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन आलोक सिंह मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है और जिसमें यह दिखाया गया है कि ईंधन इंजन बंद होने की वजह से यह हादसा हुआ है, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 1 महीने के भीतर उन्होंने ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश करी है। और मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये मोर ऑफ अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, जिसमें कि ये इस्टेब्लिश किया गया है कि पायलट और को पायलट के बीच में CVR में क्या रिकॉर्डिंग हुई है, क्या कन्वर्सेशन हुआ है दोनों के बीच में,
और DFDR की रिकॉर्डिंग हमें ये बताएगी कि उस समय एयरक्राफ्ट में क्या क्या स्विचेस किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, किस कंडीशन में थे, ऑफ थे कि ऑन थे। तो इसको हम मोर और लेस एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोल सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारी र्यूमर्स को भी पुट डाउन एट रेस्ट किया गया है। कि जैसे पहले ये र्यूमर थी कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस किया होगा, या पायलट्स ने फ्लैप को टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रखा होगा। तो ऑल दोज र्यूमर्स हैज़ आल्सो बीन पुट टू रेस्ट। ये हमें समझ में आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ होने तक टेक ऑफ गति प्राप्त करी है, तब तक सारे इंजन्स अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद दोनों इंजन का फ्यूल शट ऑफ पाए गए हैं। सर, ये कैसे हो सकता है कि अचानक से दोनों ईंधन इंजन जो है वो अपनी मर्जी से या फिर अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं? जी, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत तगड़ा इशू है, क्योंकि इस तरीके की घटना कभी सामने आई नहीं है। ये दो ही चीज़ें हो सकती है इसमें। इंटेंशनल किया जा सकता है, क्योंकि ये स्विचेस जो होते हैं इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ लगने से वो कुछ ऑफ हो गया हो। तो जब तक इंटेंशनली उसको कोई ऑफ नहीं करेगा वो ऑफ नहीं होंगे। या फिर इसमें टेक्निकल मेल फंक्शन हो सकता है, क्योंकि ये आजकल के आधुनिक विमान जितने भी हैं बहुत सारे सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। बोइंग 787 में फॉर एग्जांपल EEC होता है, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। वो सारे इंजन के बहुत सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है। फ्यूल सप्लाई वो डिसाइड करता है कितनी पावर थ्रस्ट देनी है। तो टेक्निकल मेल फंक्शन को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब तो ये आगे जांच एजेंसियों का काम है कि सारी इसकी फोरेंसिक जांच करेंगी वो, और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। सर, आपने बहुत सारी फ्लाइट ऑपरेट की होंगी, क्या आपका अनुभव क्या कहता है कि आखिर ये सब कुछ वो 10 से 15 सेकंड के भीतर कैसे हुआ होगा? जी, पहली बात तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस तरीके की घटना ये हुई है, और बोइंग 787 के इतिहास में तो पहली बार हुई है। सिंगल इंजन फेलियर होना एक बहुत रेयर घटना नहीं है, अपने आप में रेयर घटना है, पर फिर भी एक इंजन फेलियर होने पे पायलट्स पूरी तरीके से सक्षम होते हैं कि एयरक्राफ्ट को ला करके वापस पुट डाउन कर सकें सेफली। पर ये दो इंजन का एक साथ फेल होना किसी बहुत सीवियर मेल फंक्शन या फिर इंटेंशनल पायलट एरर की तरफ इंडिकेट करता है। सर, एक बार मैं चाहूँगी कि आप एक बार टेक ऑफ करें और जिस तरीके से इंजन बंद हुए थे उसे भी करके एक बार दिखाएं, हमारे दर्शकों को समझाएं ज़रा कि आखिर क्या कुछ उन 15 सेकंड में हुआ होगा। बेसिकली अगर आप देख पा रहे हैं कि हमारे अभी इस वक्त दोनों इंजन स्टार्ट हैं, ये सारे सामने इंजन पैरामीटर्स हैं, और इसमें किसी भी तरह की कोई अगर खामी नज़र आती है तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के पहले ही वार्निंग दे देगा। ये हमारे थ्रस्ट लीवर्स हैं, ये हम फुल फॉरवर्ड टेक ऑफ के लिए हमने किया। ये हमारे इंजन पैरामीटर्स थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसमें इस वक्त किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो हमें इमीडिएटली नज़र आ जाएगा। इस घटना में भी, दुर्घटना में भी एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से टेक ऑफ थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, अन्यथा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने की स्पीड को, गति को प्राप्त ही नहीं कर पाता। तो अभी आप देख पा रही हैं हमारी ग्राउंड स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे, और बताया ये जा रहा है कि इंजन 1 ने एक बार फिर से गति पकड़ ली थी, लेकिन इंजन 2 जो है वो फेल हो गया था पूरी तरीके से। अभी पहली बात तो टेक ऑफ के लिए इस एयरक्राफ्ट ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को प्राप्त किया था, जो कि टेक ऑफ के लिए नॉर्मल कंडीशन है, और अन्यथा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं करता। तो ये टेक ऑफ को इसने किया, और टेक ऑफ होने तक सारी ये चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। लेकिन अगर हमारे बीच अचानक से ये कन्वर्सेशन होती है कि इंजन जो है वो किसने ऑफ किया, तो क्या हम अचानक से इंजन को ऑन कर सकते थे? जी, इसका मैं आपको दिखा के बता सकता हूँ कि जैसे अचानक से ये वो दोनों इंजन ऑफ हो गए। अब आप देख सकते हैं ये सारी वार्निंग आ गई, दोनों इंजन ऑफ हो गए, इधर वार्निंग आ गई और ऑरल वार्निंग भी आ गई, और ये सामने विजुअल वार्निंग भी आ गई। अब इस समय पे इन्होंने दोनों इंजन को टेक ऑफ वापस से स्टार्ट करने का प्रोसीजर किया,
पर एक इंजन उसमें स्टार्ट भी हुआ, पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम समय था, वो एयरक्राफ्ट जा करके क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में क्या हुआ कि जब उन्होंने रीस्टार्ट करने का प्रोसीजर पायलट्स की जैसी ट्रेनिंग होती है इनिशिएट किया, एक इंजन ने जवाब नहीं दिया कुछ भी, लेकिन दूसरा इंजन स्टार्ट होने का प्रोसीजर शुरू हो चुका था, इंजन स्पूल अप होना शुरू हो गया था। लेकिन चूंकि इतनी कम हाइट पे हुआ था कि इसके पहले कि वो पूरी तरीके से स्पूल अप कर पाता, एयरक्राफ्ट जाके सामने बिल्डिंग में क्रैश हो गया। यानी ये जो इंजन 1 और इंजन 2 है, अगर हम इसको चाहें तो ये अचानक से ऑफ हो सकता है और ऑन भी हो सकता है, और ये साफ तौर पर दोनों ही पायलट एंड को पायलट दोनों को ही दिख रहा है। और इस कन्वर्सेशन में पायलट को पायलट के बीच में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ये जो आया है, इसमें पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा है, जैसे ही उसने देखा कि इंजन फेल हुए हैं, कि उसने पूछा है कि क्या तुमने इसको ऑफ किया है, जिसमें कि दूसरे पायलट ने इमीडिएटली जवाब दिया है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। तो ये इंडिकेट करता है कि दोनों पायलट पूरी तरीके से होशो हवास में थे और सक्षम थे पूरी तरीके से, और उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया। लेकिन प्रारंभिक जांच को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या ये फाइनल रिपोर्ट है या अभी भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं? जी, ये तो बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इसमें एक तरीके से फैक्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं कि क्या क्या हुआ है। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है कि इसकी फोरेंसिक जांच करेंगी, और भी कई तरीके के तकनीकी पहलुओं पे इसकी जांच होगी, और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा। All right, have Captain Kabir Malik, aviation expert, joining us on the broadcast. Sir, if you could just help us understand, or what is, in your observation, the problem that could have transpired? Because this only part of the cockpit conversation that has been shared in this report is that one of the pilots did not, he says, cut off the fuel switch. Then what could really have happened? And number two, sir, if you could also comment on the Pilots Association's demand or the concerns raised by them of biased, a bias towards pilots being guilty over here. So hi, good evening to everyone. I would like to say first congrats to our AIB team of India that they investigate that report is so early within a month, and the rest of report about to come maybe in another 15 days. As per my observation, what I saw and read it in the morning 2:30, the report had come to me. So I noticed that there is some problem between the pilots and co-pilot. Once the pilot asked to the co-pilot that why do you cut off? That he said I did not do. So might be because it had happened mid of the air after the takeoff. If it had happened earlier, that it would not able to take off from the runway. Although this is very much clear कि it is happen after the takeoff of the aircraft in the air after within 10 to 11 seconds, and the impact goes down and the aircraft come into the contact the land. So it is as per my observation, I cannot be allegate my both of pilots. They were very trained and they have very good experience of flying. This Captain Sabharwal almost in his complete journey of this flying, he completed more than 15,500 flying hours. He was completed. There was no complaint, no any adverse order against of his logbook. Nothing was. He was very neat and clear in the service. Same with the captain, this Kundar. Right. So I don't think so. There is something was did by intentionally or something like that. What was exactly had happened that time? We could say after the final report once come, but we can assume and we can just predict something this and that. It would not be right this time to say or allegate to anyone because they lost their lives. Their family members are also suffering in this stage. We don't want to hurt anyone. Even our pilot association write a letter to the department that in right. This stage you cannot guilty to our responsible and capable pilots.
So, yes, ma'am. All right. Captain Malik, thanks so much for joining us with your views and your insights on this story that we're tracking. Viewers, Republic TV continues to bring you all the latest updates and many more breaking news. Viewers, we'll be right back with more, but that's all the time we have on 6 Story That's 6 Saturday edition. Thanks for watching.